of the healthsite.com. Today we have Dr. Navneet Agarwal, Chief Clinical Officer of Beto app with us, who will tell us about the democratization of diabetes care. Hello, doctor. How are you? Hello, I'm good. I'm good. How are you? I'm very well, doctor. And today we Great. have such a unique topic with us, which is democratization of diabetes care. So let's begin with this. हम अपने viewers को सबसे पहले यही बताएंगे कि democratization है क्या? Diabetes care तो हम सबको पता है. Sorry. So basically, when we talk of democracy, we know that they are the rights of the people, right to good health, right to vote, right to this. So democracy gives us all the rights of a citizen of a Yes, country. Same yes, way, what I say is that the every citizen who is suffering from diabetes has a right to access to a good health, yes, right to control his diabetes, because you know now that when absolutely. sugar or when blood glucose is not controlled, it is going to create some complication in the patient's body or the causing damage to the vital organs in the body. So if it is controlled, so every patient who's having diabetes has right to have a euglycemia or normal glucose by all means. So that is like, and when we talk of achieving democracy, the main aim is to treat every person on this earth. So why like democracy, अंत्योदय टू सर्वोदय. अंत्योदय इज हर उस व्यक्ति का इलाज जो उस लाइन में सबसे आखिरी है, एंड सर्वोदय इज सबका इलाज. सो अंत्योदय मतलब यदि हम हर उस व्यक्ति का इलाज कर पाएंगे जो आखिरी है, तो हम सबका इलाज कर पाएंगे. दैट इज अंत्योदय टू सर्वोदय टू अचीव Survey. डेमोक्रेसी इन डायबिटीज इन द कंट्री. Okay, so this is what we understand from the democratization of diabetes care. So, doctor, what do you say? I mean, is every diabetic patient in India getting the equal treatment that is needed? क्या हम सबको वो इलाज मिल रहा है या अभी भी हम कितना पीछे हैं? Yes, we know like India is a hub of diabetic patients, and yes, as you rightly pointed out कि हर उस व्यक्ति को वो उतना इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कई सारे पेशेंट की रीच से बाहर है. और क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल. पेशेंट को खुद पैसे देने हैं, गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, लेकिन पेशेंट यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसे रूरल एरियाज में है जहाँ पे उनको ट्रैवलिंग का एक इशू है. सो एक्सेसिबिलिटी एक हाँ. उनका इशू है. कई बार अफोर्डेबिलिटी एक मैटर है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्रीटमेंट को, इलाज को, इंसुलिन थेरेपी को, क्योंकि दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं. हालांकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री मिलती हैं, लेकिन कई सारे जी. लोग नहीं जा पाते वहाँ तक, उनको बाजार से खरीदनी है, तो वो वहाँ एक अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज है. यदि वो स्पेशलिस्ट पे जाना चाहते हैं, तो पेशेंट लोड इतना एक्चुअल में इतना वॉल्यूम है या इतना नंबर ऑफ पेशेंट इतना ज़्यादा है कि हर हेल्थ फैसिलिटी पर लोड है. ज्योग्राफिकल बिल्कुल. चैलेंजेस हैं, अफोर्डेबिलिटी चैलेंजेस हैं. देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, वो है अवेयरनेस. लोगों को पता है कि बिल्कुल. डायबिटीज है, उसका इलाज इसलिए नहीं कराते कि उनके दिमाग में सीवियरिटी नहीं है उस बीमारी की, परसीव्ड सीवियरिटी नहीं है, वो इसको सीरियस नहीं लेते. उनको लगता है ठीक है, शुगर मेरी ज्यादा नहीं है, तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मैं इलाज इसका आराम से करा लूंगा या नहीं भी कराऊंगा, दवाई नहीं खाई, कुछ दिन दवाई छोड़ दी उन्होंने. सो लाइक दे डोंट टेक दैट सीरियसली. हाँ. सो अवेयरनेस इज अ चैलेंज. सो मेजर चैलेंजेस आर लैक ऑफ अवेयरनेस, lack of accessibility and lack of affordability. So these are the three major hindrances that you're talking about कि क्यों हम आज भी डायबिटीज को पूरी तरह से, obviously we know that it's not a curable disease but we can control it. हम उसको Yes. रोकथाम कर सकते हैं इस डायबिटीज को, जैसे कि हम बॉर्डरलाइन डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हम जेस्टेशनल डायबिटीज को उस बॉर्डर के उस तरफ जाने से हम जैसे रोक ऐसे सकते रोक हैं. सकते हैं. Yes. तो बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, ये एक लाइफस्टाइल, एक हमारी चेंजेस करने से हमें काफी फर्क मिल सकता है. हम यदि बट रिस्क जैसे फैक्टर्स कि के आपने लेवल पर बताया. डायबिटिक पेशेंट में, यदि हम रिस्क फैक्टर के लेवल पर डायबिटिक पेशेंट में काम करें, से लाइक जैसे आपने बोला जेस्टेशन डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, या यस. ओबीज लोग हैं जिनको रिस्क है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिनमें, उन पे हम काम करें तो इसको हम आगे होने से रोक बिल्कुल. सकते हैं. वी कैन पोस्टपोन इट, दो वी कैन नॉट क्योर इट, बट वी कैन पोस्टपोन इट. एंड इवन जिन पेशेंट को यस. डायबिटीज है उनका हम एग्रेसिवली कंट्रोल करते हैं, सो वी कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन इन द फ्यूचर लाइफ. यस. पर हम कॉम्प्लिकेशंस पे कैसे वर्क कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट टाइप 2 डायबिटीज, डॉक्टर. सो आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट दिस कि मतलब टाइप 2 डायबिटीज जो कि इंडिया में जिसका रेट काफी हाई है, एंड
इंडियन यूथ बहुत ही तेजी से इस तरफ बढ़ रहा है, जैसे मैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? यस, यदि हम देखें इंडिया में हमारे यहाँ डायबिटीज ऑलमोस्ट एक डिकेड जल्दी होती है, अ डिकेड अर्लियर देन द यूरोपियन एंड अमेरिकन पॉपुलेशन. So we are genetically Oh predisposed wow. to develop diabetes early, almost a decade earlier. तो हमारे यूथ को वैसे ही जेनेटिकली प्रीडिस्पोज में. ऊपर से आप देखेंगे कि जो हमारे एडोलसेंट्स हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, Yes. उनमें ओबेसिटी बहुत है. ओबेसिटी बहुत है, एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा है, विसरल फैट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं Wow. कर पाता, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. और यही बच्चे जो 15-16 Hmm. साल के, 14-15 साल के बच्चे जो ओबीस बच्चे हैं, ये 23-24 साल की जाकर में Hmm. जैसे ही यूथ होते हैं, इनको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ Hmm. जाता है. एक तो रीजन है ओबेसिटी, वेट. दूसरा, चूंकि पेरेंट्स दोनों को डायबिटीज है, सो लाइक जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, सो फैमिली हिस्ट्री में यदि मदर फादर दोनों को Hmm. डायबिटीज है, तो यंगर जनरेशन को ज्यादा जल्दी डायबिटीज होने का खतरा है, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है. चांसेस सो लाइक ज्यादा होते हैं. स्ट्रॉन्ग, yes, a strong family history. On the top of that, if you have a more weight, you are more likely to develop diabetes early in your life. यस. यस. सो यू आर सेइंग दैट टाइप 2 डायबिटीज को, या फिर डॉक्टर, अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो खतरा तो दोनों के लिए सेम है, नहीं, बट वेट एंड रीजन टाइप अलग ओबेसिटी. है. नहीं नहीं नहीं, obesity is risk for only type 2, not for type 1. टाइप टाइप 1 इज 2. ऑलटुगेदर डिफरेंट एंटिटी. टाइप 1 डायबिटीज जो होती है, वो किसी भी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारे पैनक्रियाज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. पैनक्रियाज में से बीटा सेल्स में से जो इंसुलिन बनता है वो बनना बंद हो जाता है, इसलिए वो बंद हो इंसुलिन जाता की है. कमी की वजह से टाइप 1 डायबिटीज में सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लेना पड़ता है. सो टाइप 1 डायबिटीज इज यस. नॉट एसोसिएटेड विद ओबेसिटी. इनफैक्ट टाइप 1 डायबिटीज में तो बच्चों का वजन कम हो जाता है, दे आर लीन थिन एंड दे हैव अ लीन वेट, नॉट ओबीस. Okay. Okay. So these are two entirely different, and this cannot happen like जिसको टाइप 2 है वो टाइप 1 के खतरे से बिल्कुल अलग है, तो ये हमारी पॉपुलेशन को. टाइप 1 और टाइप 2 टोटल डिफरेंट है. दो दे आर डायबिटीज, बट टाइप 1 हैज अ डिफरेंट कॉज, डिफरेंट पैथोजेनेसिस, डिफरेंट प्रोग्नोसिस, एंड टाइप 2 हैज अ डिफरेंट Yeah. कॉज एंड डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स. सो डॉक्टर, क्या हमारी पॉपुलेशन को इतनी अवेयरनेस है कि these two are different types, और people are still Yes, yes. confused? No one gets confused. People are aware, and type 1 is different. Basically, type 1 usually gets diagnosed in the early age of life, and type 2 gets usually diagnosed in the like second decade or third decade. And majorly, if you see in the country or across the globe, 90 to 95% is type 2. Only 5-7% patients are type 1. So type 1 is Type not that much. Yes. Majorly, whenever we talk diabetes, हम जब diabetes की बात करते हैं, तो it we presume it is type 2 diabetes. 1. Yes, mostly because Yes, most में because the टाइप 2 population के of ही type ज्यादा 2 is मिलते more. हैं. Yes. So doctor, what is the current diabetes situation? अगर मैं, if I talk beyond the metros, if I say it's beyond Yeah. the metro cities in In the India. country, if you see the overall data from the IDF data, it's almost the prevalence is around 10%. But it is diagnosed prevalence. So like it is known prevalence. But if you add on the undiagnosed, undetected, this prevalence can go anywhere. So the prevalence is very high in the Okay. country. And as you ask, like मेट्रो से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में, पहले हम मानते थे Yes. कि ये शहरी क्षेत्रों की बीमारी है, रईसों की बीमारी है, Hmm. पैसे वालों की बीमारी है. बट वी सी द नाउ द पीपल फ्रॉम द रूरल विलेजेस, रूरल एरियाज, जो बिल्कुल नॉट दैट मच अफोर्डिंग या बहुत रिच नहीं है, बट स्टिल दिस इज इंक्रीजिंग टू द रूरल एरियाज एंड ग्रामीण क्षेत्रों में. So the diabetes Okay. is not limited to metros. It has gone to the all the areas. So कोई भी क्षेत्र, कोई भी geographical area, there is no, what I say that diabetes has no boundaries, no age, Yes. no age boundaries, no gender boundaries, no socioeconomic status boundaries, no geographical location boundaries. So it has no boundaries, and it is rampant. It is going everywhere. So it has no limitation that it is not going to the rural areas, and even rural areas में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सब में बहुत बढ़ रही है. बिकॉज जो लाइफस्टाइल है हमारा, उसका So रीजन ये है, जो लाइफस्टाइल है, जो हम पहले बोलते थे शहरों में है या मेट्रोज में है, लोग टीवी देखते हैं, एसी में रहते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो ग्रामीण गांव में भी अब आप घर घर फास्ट फूड पहुंच गया है, घर घर मोमोज मिलते हैं. आप छोटे बिल्कुल. छोटे गाँव में आप देखेंगे, वहां पे ये सारा फास्ट फूड का कल्चर छोटे छोटे गाँव में हो गया है. तो ये जो फास्ट फूड का बिल्कुल. कल्चर है, लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, ये अब सब जगह हो गया है. इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली दी मेट्रोज. Yes. So you are telling that this is the reason कि ये जो बीमारी अब शहरों तक ही सीमित नहीं है,
और ये आगे भी yes, इसलिए फैलती जा रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, इफ आई कैन से, दिस yes, इज द मेजर फैक्टर। जैसे कि डिजिटलाइजेशन अगर हर जगह हो गई है, तो ये भी वैसे ही, pros and cons. It's one of the, cons of. yes. Okay, so doctor, can hereditary diabetes that we are talking about, the type 2 diabetes, uh, क्या इंडियन एपिडेमिक में क्या हम बहुत ज्यादा इसको हम देख पाते हैं, या फिर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कितना खतरा है ये टाइप 2 डायबिटीज? Type 2 diabetes, as we saying, like 95% patients are almost of type 2 diabetes. So, like when you're asking of जी, hereditary, so there is a या, dictum: genes load the gun, and environment pulls the ओके, trigger. I'll repeat: genes load the gun, and environment pulls the trigger. That means we all, including you and me, we have born with the loaded genes of developing type 2 diabetes in future. हम जेनेटिकली हर ओके, आदमी जो एशियन फेनोटाइप का है या जो एशियन जीनोटाइप का है, इंडिया में जो सब कॉन्टिनेंट में जो जन्मा है, उसको सबको डायबिटीज होने का रिस्क उसकी लाइफ टाइम में है। सिर्फ हम क्यों, हमारे ऊपर है। सो हम जेनेटिकली प्रीलोडेड है, बस हमारे ऊपर है कि हम गन कब कब ट्रिगर दबा दें। मतलब हमने कब अपना वेट बढ़ाया, कब हमने लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की, और हमने अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो की, और देन विल डेवलप डायबिटीज। So we are all preloaded. Only thing is that we with these are environmental factors like obesity, overweight, lack of physical activity, diabetes को कभी भी कर सकते हैं। So it has a importance, like we all are predisposed, बशर्ते हम अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो हम इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं, बच सकते हैं, मे बी फॉर 60 years 70 years। यदि हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल या, फॉलो करेंगे तो उनको 40 में होने वाली थी वो हमको 25 में भी हो सकती है। exactly. Yes. So, doctor, what lifestyle changes, can help a person, to prevent diabetes, and those who are already living with this disease, so how can they lead a healthier life? सो हेल्दियर लाइफ के लिए जरूरी है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। और हेल्दी लाइफस्टाइल Hmm. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोई मतलब एक पार्ट कर रहे हैं, हम सारे पार्ट्स पर फोकस करें। सो लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे पहला है डाइट। इफ यू टॉकिंग ऑफ Okay. डायबिटीज, तो आपका बैलेंस डाइट, Hmm. बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि उसमें प्रॉपर मात्रा में कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स आपको मिलने चाहिए। जैसे हमारा WHO का रिकमेंडेशन है, यू शुड टेक मिनिमम 400 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ डे। 80 ग्राम्स की सर्विंग्स, 5 टाइम सर्विंग्स होनी चाहिए। प्रोटीन्स प्रॉपर अमाउंट होने चाहिए। हमारे इंडियन सेटअप में हमारी मेनली डाइट जो है सीरियल बेस्ड है, कार्ब बेस्ड डाइट ज्यादा है, इसलिए हमारे प्रोटीन की डिफिशियंसी ज्यादा है, पर्टिकुलरली Hmm. वेजिटेरियन डाइट में। सो लाइक वी शुड फोकस ऑन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, देन लेस ऑफ कार्ब्स। हमारा हम सब कुछ कर लेंगे कि हमको Hmm. रोटी जरूर खानी है, राइस जरूर खाना है। सो वो कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं 70 to 75% कैलोरीज हमारी कार्ब से आती हैं, वो हमको करनी चाहिए, चाहे डायबिटीज हो या नहीं हो, चाहे हम प्रिवेंट करना चाहते हो। सो देयर शुड बी अ Hmm. बैलेंस, बैलेंस डाइट इन ऑल दी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बैलेंस डाइट है, आप वो लें। और भाई क्या होता है कि लोग यहाँ वहां से ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन से गलत डाइट्स ले रहे होते हैं, एंड दे आर लीडिंग इनटू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सो वन इज Hmm. डाइट, देन यू शुड फॉलो, एंड मील पैटर्न भी आपका डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि मील में आप देखेंगे लोग क्या करते हैं, नाश्ता बहुत हल्का करते हैं, लंच ठीक से करते हैं, डिनर बहुत हैवी करते हैं। जबकि हाँ, हमारा नाश्ता हैवी होना चाहिए, लंच वर्किंग होना चाहिए, डिनर शुड बी द लाइटेस्ट लाइटेस्ट मील। lightest meal of the day. उल्टा हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा सुबह शुगर और मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, और वो वेट बढ़ाने का और वेसल फैट बढ़ने का कारण होता है। सो वन दैट इज डाइट। Then second thing is exercise, physical activity. So the Hmm. ADA recommends that you should have minimum 150 minutes of exercise per week, 30 to Hmm. 45 minutes per day, at least minimum 5 days a week. And exercise not necessary कि आप जिम जाएं या वहाँ पे वेट उठाएं, you do a brisk walk, jogging, cycling, swimming, whatever you are comfortable. So जो भी आपकी आपकी physical physique आपको permit करती है, you can do that physical activity for 30 to 45 minutes in a week. That will be sufficient. एंड द वॉक शुड बी अ ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये है कि आप तेज तेज चलें, इतना चलें जिससे आपका बीएमआर बढ़े, कैलोरीज बर्न हो और हार्ट रेट बढ़े। Hmm. तो एक्सरसाइज। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम में हम देखते हैं, दैट इज स्ट्रेस। Stress is now upcoming a major reason for all these, not only diabetes but for all lifestyle associated diseases, be it hypertension, be it coronary disease, be it Yes. heart, or any disease. So like stress, so you should do a minimum say 5-10 minutes of meditation, yoga, pranayam, whatever you can do to de-stress yourself. Hmm. So stress,
diet, and then the physical activity. They are the lifestyle changes, and then you should avoid smoking and reduce the amount of alcohol. They are the part of the lifestyle changes. Okay. The patient, those who are, and the most important, like of all these things, you should be able to bring your weight to your ideal weight. If you are overweight, Okay. you are having a risk of developing diabetes or heart hypertension or heart disease or coronary artery disease. So the weight is a major challenge. Your weight should be an ideal weight. Then only you can reduce the risk of developing diabetes in future. For patients who are already having diabetes, they should be advised Hmm. to a regular monitoring. Many of times what we see कि पेशेंट जिनको डायबिटीज वो महीनों महीनों शुगर की जांच नहीं करते. नहीं मेरा तो ठीक चल रहा है, मुझे तो कोई Hmm. तकलीफ ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है. वो तकलीफ Hmm. का इंतजार, दे वेट फॉर अ प्रॉब्लम, दे शुड नॉट वेट फॉर अ प्रॉब्लम. आपको जब भी ऐसा लगता है कि शुगर नहीं की बढ़ रही है या वो कोई सिम्टम नहीं है, बट स्टिल और रेगुलर मॉनिटरिंग, मिनिमम हफ्ते में एक बार अपनी शुगर चेक करें, खाली पेट भरे पेट. खाली पेट की शुगर 100 के आसपास Hmm. खाने के बाद के नीचे रहनी चाहिए. हर 3 महीने में आप अपना HbA1c करें, जो कि 7% के नीचे रहना चाहिए. सो रेगुलर मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट. यदि आप टेस्ट ही नहीं करेंगे, आप मॉनिटरिंग ही नहीं करेंगे, तो आपको पता कैसे लगेगा शुगर कितनी चल रही है. डोंट वेट फॉर Exactly. सिम्टम. सिम्टम्स तो जब होंगे जब शुगर बहुत बढ़ जाएगी. सो डोंट वेट फॉर सिम्टम. ये दीमक है, दिखता कुछ नहीं है और दिखता है तो बचता कुछ नहीं है. तो वो अंदर ही अंदर से शरीर को Hmm. खोखला कर देता है. सो हम यदि खुद ही अपना जांच करते हैं, सो रेगुलर मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डायबिटिक पेशेंट. वन. सेकेंडली, वॉट एवर द ट्रीटमेंट, Hmm. पीपल यूजुअली फाइट विद द ट्रीटमेंट, दे डोंट फाइट विद द डिजीज. Hmm. क्या दवाई नहीं खानी है, दवाई नुकसान करेगी, या ये नहीं करना है, दवाइयों से बचना चाहता हूँ, मैं ये कर लूंगा. बट Hmm. इस सारी Hmm. में ना दे फाइट मेडिसिन नॉट द डिजीज. यस, आप बिना दवाई के कंट्रोल कर सकते हैं, वेरी गुड, देयर आर मल्टीपल वेज फॉर रिवर्सल, बट वो हर किसी के लिए संभव नहीं है. सो यू शुड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, एंड Hmm. इफ इट्स देन विद द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर, यू शुड ट्राई टू रिड्यूस मेडिकेशन, बट डोंट स्टॉप योर मेडिकेशन ऑफ योर ओन. ऐसा नहीं कि बस मेरे को दवाई नहीं खानी, Yes. मैं दवाई बंद. आप डॉक्टर की देख रेख में अपना Hmm. नियमित जांच करें, डॉक्टर से सलाह लें, और धीरे धीरे करके अपनी दवाइयाँ कम करें. Hmm. दवाई सेम वे इंसुलिन का भी बड़ा फोबिया है पेशेंट में. इंसुलिन लगाना ये आखिरी इलाज है, ऐसा नहीं है. इंसुलिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, मैनेजिंग डायबिटीज. बट पेशेंट्स को इतना फोबिया है इंसुलिन का, लाइक दे डोंट एक्सेप्ट इंसुलिन थेरेपी. So patient of diabetes, they should follow a healthy lifestyle. They should take their medicines regularly, and advice from their physician, like the जिनको भी वो कंसल्ट कर रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर एडवाइस लें, उनके मार्गदर्शन लें, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से, हेल्थ कोच से अपना मार्गदर्शन लें कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सो दैट दे कैन अ हेल्दी लॉन्गर लाइफ. So, doctor, you really gave us some really good key points about the lifestyle changes that one can have and prevent this deadly disease. So, doctor, one last question that we'll take, that is, how can diabetes care made more accessible and affordable to all the population? सो व्हेन वी टॉक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, जैसे आपने पहले भी पूछा था कि मेट्रोज के नीचे गांव में आप छोटे छोटे से गांव देखेंगे जिनकी Hmm. पॉपुलेशन 5,000 है, 7,000 है, जहां बस से पहुंचने में 2-2 3 3 घंटे Hmm. लगते हैं तहसील से या जिले से. ऐसे लोगों में भी डायबिटीज हो रही है, ऐसे गांव में भी डायबिटीज हो रही है. और मुझे लगता है कि Hmm. एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इज द ओनली सॉल्यूशन. वाई टेक्नोलॉजी आई एम सेइंग, आप देखेंगे Okay. आज हम इंडिया सेकंड हाईएस्ट स्मार्टफोन यूजर है दुनिया में. तो इसका मतलब स्मार्टफोन हमारा गांव गांव तक पहुंच गया है, और उस गांव Hmm. तक पहुंचने के लिए हम यदि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना Hmm. डायबिटीज केयर को पहुंचा सकें, तो हम इसको सक्सेसफुल मिशन बना सकते हैं. हर गांव में जहां भी बिजली है, जहां पे भी कुछ भी पहुंचा है, वहां फोन जरूर पहुंच गया है, चाहे वो गांव में रहता है, खेत पे रहता है पेशेंट. सो टेक्नोलॉजी विल बी द ओनली आंसर टू प्रोवाइड द गुड एक्सेस टू द डायबिटीज केयर एट देयर होम. बिकॉज लाइक जो गांव से है उसको शहर तक ट्रैवल करना पड़ता है, सारा दिन उसका खराब होता है, काम छूट जाता है जस्ट टू कंसल्ट अ डॉक्टर. So if you can provide any solution Exactly. at their home on their mobile with the help of Hmm. technology, definitely we can have a good access Hmm. to everyone. They don't have to travel a lot to take the जैसे कहते हैं ना, अपना इलाज कराने में Yes. वो ट्रैवलिंग. एंड इफ यू कैन डिलीवर, लाइक उनको सब हम सारी हाँ. सुविधाएं उनको पहुंचा सकें, चाहे वो खेत पे रहता हो, गांव में रहता हो, छोटे जिले में रहता हो, बड़े जिले में रहता हो. सो दी टेक्नोलॉजी विल बी द आंसर टू Hmm. प्रोवाइड access to the good diabetes care. सेकंड, एज यू टेक अफोर्डेबिलिटी, यस अफोर्डेबिलिटी मेजर चैलेंज जो लगी थी. आप टेक्नोलॉजी से उनके घर पे आप उनका इलाज पहुंचा रहे हो, तो आप बहुत सारी कॉस्ट उनकी कम कर रहे हो, जो Hmm. जो एसोसिएटेड कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट, एक दिन का जो काम उसका लॉस हो Hmm. रहा है. यदि Yes. किसी बंदे को 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो एक दिन पूरा खराब होगा. बस का किराया, ट्रेन का किराया, एक दिन का वो अपनी Hmm. शॉप बंद कर जाएगा, वो कॉस्ट आपने कम कर दी. तो अफोर्डेबिलिटी तो यहीं बढ़ गई पहली.
दूसरी, if you can हाँ provide a बिल्कुल. low cost medicine and low cost consultation, definitely you can have a good affordable access to a good diabetes care. That is the main goal. Okay, so you have told us everything about diabetes in this session, and I'm really glad to have you. And thank you for this wonderful session, because even I am enlightened by a few topics that I was, confused about. But now I'm well aware of it. That how can I prevent this deadly disease, and how can everyone who is, dealing with this and who are on the verge of getting it can prevent themselves. Thank you so much, Dr. Navneet, for your time and giving us such Thank good you, Tavishi. Thank information. you. Thank Thank you. you. Thank you for inviting me. Thank you. Namaskar.